नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई का 50% यूनिफॉर्म पेंशन रेस्टोरेशन का जो मामला है, वो 10 नवंबर 2023 से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू तो हो गया और स्टेट बैंक द्वारा मार्च 2024 में काफ़ी लोगों को यूनिफॉर्म पेंशन रिवाइज करके दे दिया और उसका एरियर भी दे दिया। लेकिन अभी 12th बाइपेटाइट के रिटायरीज और 10,000 से ऊपर पुराने रिटायरीज ऐसे हैं जिनको कि यह बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ था मार्च के महीने में। उम्मीद की जाती है कि अप्रैल 2024 की पेंशन में उनको रिवाइज पेंशन के अलावा एरियर भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 मई 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग है उस केस की, और उस हियरिंग में बैंक और गवर्नमेंट को कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। स्टेट बैंक की कंप्लायंस रिपोर्ट तभी कंप्लीट होगी जब वो सभी एलिजिबल पेंशनर्स को एरियर और रिवाइज पेंशन दे देंगे। इस संदर्भ में पिछले 1 महीने से पूरी एक्टिविटीज चल रही हैं और उम्मीद की जाती है कि 27 तारीख को जो पेंशन मिलेगी उसमें सभी लोगों को एरियर और रिवाइज पेंशन 50% यूनिफॉर्म पेंशन के हिसाब से दे दी जाएगी। दोस्तों, इसमें अब जो मामला है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, उसके लिए 2 मई 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और उसमें जो रिट पिटिशनर हैं उसमें एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन की फेडरेशन भी है और जीओपी ग्रुप के पेंशनर्स भी हैं। कई रिट पिटिशन है उसमें। ऐसा प्रतीत होता है कि पेंशनर्स की जो फेडरेशन है वो इस मामले को आगे परस्यू करती है या नहीं, इसमें कहीं पर भी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जीओपी वाले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए आगे अपना एफिडेविट फाइल करेंगे जिसमें वो ये सबमिट करेंगे कि जो एनोमली की गई थी वो तो 1/3/1999 से थी और इसमें जो 50% यूनिफॉर्म पेंशन दी गई है वो डीएफएस के निर्देशों पर 10 नवंबर 2023 से ही दी गई। इस संबंध में जीओपी ग्रुप के एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं और उसी लाइन में जीओपी 2 तारीख को अपना एफिडेविट फाइल करेगा या जो आवश्यक कार्रवाई करेगा। आइए तो जीओपी का मैसेज है उस पर चर्चा करें। दोस्तों, ये उन्होंने हेडिंग डाला है द केस फॉर रिट्रोस्पेक्टिव पेमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 50 सब सेक्शन 4 ऑफ द एसबीआई एक्ट। जो ये केस है ये इसी सेक्शन पर निर्भर करेगा। इफ वी रीड द committee report of October 2023, it will be observed that the word anomaly has been used by the SBI, IBA, and the expert committee to describe pension payment in SBI post March 1999. The three entities, including all members of expert committee, were of the unanimous opinion that this situation had to be rectified. Unfortunately, the bank has done so only from an arbitrary date of 10th November 2023. If we refer the meaning of this word anomaly, it will reveal that it means something that deviates from what is standard, normal, or expected. Further, the word prejudice would mean injury or damage resulting from some judgment or action of another in disregard of one's right, especially detrimental to one's right or claim. Now let us go to section 50 subsection 4 of SBI Act. It is important to note that this subsection was not in the original act but was inserted by an
amendment with effect from 15 to 1984. An amendment is always made with an intention to add or delete to existing provision or clarify further. This amendment was inserted to set out the procedure for any further amendment to be made. For us, the condition stipulated in the concluding part of this subsection is vital, and it reads as under. So, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation. So, having inserted such detailed amendment in Section 50 of SBI Act, which regulates every aspect of our pension, the amendment with effect from 1st March 99, reducing pension from 50% to 40% is void ab initio, as it was prejudicial to the right of a section of the pensioner to draw pension as hitherto, and as provided in Regulation 23, Sub-Regulation 1 of pension rules at 1 by 60 of the average pay drawn during the last 12 months of service for each year of pensionable service. So, having now considered that they created an anomaly para 2.3 with effect from 1/3/99, read post 1999 in the report, and also by doing so created different group of pensioners para 2.7 in SBI. For calculating pensionary benefit, the SBI violated its own pension regulation and also Article 14 of the Constitution, para 2.7 and 2.19. This amendment is void and illegal. The damage has therefore to be undone from the date of creation, that is 1/3/1999, and not from an arbitrary date. We are further dealing with the pension, which has classified by the Supreme Court as akin to property and hence enjoy protection under Article 300A of the Constitution. It may be noted that the committee in its report has clearly stated that what is now being recommended is only restoration para 2.21 of 50%, thereby indicating that 40% pension had taken away an existing benefit, establishing that by doing so the amendment of 1/3/99 prejudiced something validity done in the past. Other factors for retrospective payment, the committee having unanimously agreed to restore 50% and considered that an anomaly existed since 1/3/99, it would appear that they also implied that the restoration of 50% pension would be effected from the date of the anomaly was officially created, that is 1/3/99. This is implied in its observation on the financial implication of its recommendation and the recording of the fact by the committee that the SBI is in a position to bear the financial obligation arising out of this. This was estimated to rupees 283 crore per annum, with a one-time cost of provisioning for implementation of uniform rate of 50% to be rupees 5,400 crores. That the provisioning of 5,400 crore was intended to meet the cost of retrospective effect of the recommendation can be discerned from the following. One, in para 2.23 and 3.11, the bank has estimated and the committee has accepted the
annual cost will be 283 crore and one-time cost of provisioning for implementation of uniform rate of 50% would be 5,400 crore. In the third quarter result, the amount of 5,400 crore along with the outlay of 1,700 crore for DA neutralization payout was separately classified together as 7,100 crore under a special heading exceptional items and not under contingencies and provisions, which were indicated separately as rupees 687.85 crore. Third, this is further clear from two statements of our chairman in the media as quoted below. Chairman Dinesh Khare underscored that bank provided for a liability of 5,400 crore in quarter 3 to correct the anomaly in pension, which persisted from 2002 onward. Further, 1,700 crore was provided due to DA neutralization to pre-2002 retirees business line 3rd February 2024. The second was paid with certain retrospective effect and is being challenged in the court by banking industry pensioners. Now that there was a legal clarity, we thought of clearing this at a go with this 5,400 crore allocation. This allocation takes care the entire backlog till December 2023. Deccan Chronicle, 3rd February 2024. The committee in the introduction to its report states Honorable Court further mentioned in a said order that in case it is decided not to exceed the request of the petitioner, the reason thereof be communicated to the court before the next date of hearing. The prayer all the writs before the Honorable High Court are for restoration of 50% with the retrospective effect, since no mention as directed by the court was made of only implementing the same with prospective effect or reason thereof. The natural inference is that it would be with retrospective effect. ये जो मैसेज है वो एक जीओपी ग्रुप के इम्पोर्टेंट मेंबर हैं एंटनी, जो कि शुरू से ही इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ही इस मैसेज को जारी किया है और इस मैसेज का जो इम्पोर्टेंस है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब 2 मई को जो भी सबमिशन होंगे उस पर निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है और उसके लिए फर्दर क्या डायरेक्शंस देता है, क्योंकि बैंक इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट में देगा कि हमने 10 नवंबर 2023 से लोगों को 50% यूनिफॉर्म पेंशन दे दी है और एरियर भी पे कर दिया, तो उसमें उनको ये रीज़न भी देना पड़ेगा कि इसको केवल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिया गया, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से रीज़न देना पड़ेगा। और साथ ही डीएफएस को भी उसमें अपने एफिडेविट में देना पड़ेगा कि उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने के बजाय प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने के लिए क्यों डिसीजन कन्वे किया। तो इस तरह से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डीएफएस दोनों पार्टीज हैं, दोनों ही अपना जस्टिफिकेशन सबमिट करेंगे और उसके बेसिस पे ही कोर्ट आगे कार्रवाई करेगा। साथ ही जीओपी ग्रुप के या दूसरे पटिशनर जो फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन है वो भी किस तरह से इसमें आगे दलील देते हैं उस पर भी निर्भर करेगा इस रेट पिटिशन का अगली कार्रवाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और ये जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कुछ जानना चाहें तो उसके लिए कमेंट अवश्य। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक के पेंशन से संबंधित, बैंक
की स्कीम्स के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।